Hey guys, this is Abhishek Mishra and today we are going to study about the DNA replication. तो DNA कैसे बनता है, एक DNA से दूसरा DNA कैसे बनता है और दूसरा DNA बनने की ज़रूरत क्या है। सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन होने के बाद एक सेल से दूसरे सेल में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होगा। उस जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र वो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन भी होना है। तो ये जो DNA का ट्रांसफ़र हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये उसका रेप्लिकेशन करने के बाद भी पॉसिबल हो पाएगा। उससे पॉसिबल नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल विदाउट रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। सो वी नीड टू रेप्लिकेट द DNA. And how does it happen? That is what we are going to study right now. So first of all, we need to study about, we need to know a little bit about the central dogma. Which was given by Crick, and according to that, DNA is the basic genetic material of all living organisms on earth, and from DNA, by the process of transcription, we form RNA. DNA से RNA बनाती है और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और RNA से प्रोटीन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन. वी ट्रांसलेट RNA टू फॉर्म प्रोटीन. ओके, द प्रोटीन इज ऑफ डिफरेंट कोडिंग. इसकी लैंग्वेज अलग है, इसकी लैंग्वेज अलग है और इसकी लैंग्वेज अलग है. आई मीन टू से द लैंग्वेज ऑफ DNA एंड RNA इज सेम एंड द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन इज डिफरेंट. The basic physiological maintenance or physiological, you could say, metabolism is regulated by protein. A few ribosomes which are made up of RNA regulate the regulating metabolism or physiological metabolism and act as enzyme, but most of this is protein. So we need to change the language from DNA and RNA to protein. The language needed to be changed. Okay, this is the language of protein is amino acid and the language of DNA and RNA is nucleotide. So what exactly is nucleotide and how DNA form RNA and RNA form protein? We are going to study all of this in different video. Right now we need to study how DNA form another DNA, and that is the process of replication, and we need to study it right now. हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं DNA से DNA कैसे बनेगा, DNA से RNA और RNA से प्रोटीन. ये अलग अलग प्रोसेस से बनती है. इसका भाषा अलग है, इसकी भाषा, इस दोनों की भाषा सेम है और इसकी भाषा अलग है. इसकी भाषा है अमीनो एसिड की और इस दोनों की भाषा है न्यूक्लियोटाइड की. तो न्यूक्लियोटाइड से अमीनो एसिड पे ले जाना ये काफ़ी ज़्यादा जेनेटिस्ट और बायोकेमिस्ट के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था. इस बारे में किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे. वी नीड टू स्टडी अ लिटिल बिट अबाउट द यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड द वायरल जेनेटिक मटेरियल. इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड वायरल जेनेटिक मटेरियल, विद द एक्सेप्शन ऑफ वायरस. अगर वायरस को हम अब बाद में रखते हैं तो इसके अलावा जितने भी यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल हैं सभी का जेनेटिक मटेरियल DNA ही है. वायरस में भी DNA ही है. एक्सेप्शन कुछ है वायरस में जिसका कि जेनेटिक मटेरियल DNA नहीं है, जैसे कि रेट्रोवायरस, ओके, टोबैको मोज़ेइक वायरस जो एड्स कॉजिंग वायरस है, HIV. वो इसके अलावा कुछ और एक्सेप्शन है जिसमें कि RNA जीनोम है. मैक्सिमम जो भी वायरस में भी उसमें DNA जीनोम है, एज फॉर एग्जांपल कॉलीफ्लावर मोज़ेइक वायरस. So if you talk about the eukaryotic cell, we take for example our cell, human cell. In the case of human, we have 23 pair of chromosome, and in 23 pair of chromosome we contain 3 into 10 to the power 9 base pair of nucleotide or DNA, we could say, and that is about 3 billion base pairs. And if we double the number of chromosome, our all the cell contain 46 chromosome. This is only for 23 pair. If we double the number of chromosome, then that become double. That is 6 into 10 to the power 9 base pair. If we take the cell of चूहा, I mean a mouse, अगर हम चूहा का सेल लें, it also contain 2.7 into 10 to the power 9 base pair on its 20 chromosome. If we take yeast for example, it is a fungus which is used for making bread and beer and different kinds of wine for fermentation. Okay, so if you take yeast for example, it is also eukaryotic cell. Fungus is in eukaryotic cell. Then the number of DNA is about million. It is not in billion, it is in million. It is approximately 10 to the power 6 base pair in the case of yeast. And if we take fruit fly, जिस पे कि मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था, fruit fly, on its 4 base pair it contain 2 into 10 to the power 6 base pair of DNA. So you have to remember that this is the organism on which the Morgan experimented and discovered link is. Okay, and it contain on its haploid genome 4 chromosome and diploid become 8 chromosome. We talk about any eukaryotic DNA and prokaryotic DNA. There is a subtle difference between eukaryotic and prokaryotic DNA. Okay, and that is what is remarkable. ये जो डिफरेंस है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक DNA में, ये हमारा जो रेप्लिकेशन होगा इस दोनों का, इसमें इनका इंपॉर्टेंस है. क्योंकि अगर ये डिफरेंस में पता रहेगा तो इनमें जो रेप्लिकेशन में डिफरेंसेस आते हैं, ये कुछ में कुछ रिमार्केबल डिफरेंसेस आते हैं, इसका पता चल जाएगा. ओके, तो यूकैरियोटिक DNA जो होती है ये लॉन्ग होती है, लीनियर होती है, एंड डबल स्टैंडर्ड, DS स्टैंड फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA. That is what eukaryotic DNA is.
इट इज़ लॉन्ग लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करें, प्रोकैरियोटिक डीएनए, ओके, it is double standard circular, okay, and it is a little bit smaller than the eukaryotic DNA. That is what we need to know. Prokaryotic DNA जो होती है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होती है without any exception, like in the case of bacteria, mycoplasma, all these contain the circular DNA and that is double standard, and this double standard is going to cause a little bit of problem, and that problem we are going to deal separately. ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर की वजह से एक प्रॉब्लम होगी। अगर मैथमेटिक्स का एक सिद्धांत के अनुसार हम लोग देखें तो अगर दो सर्कल आपस में इंटरट्वाइन है तो उन दोनों को सेपरेट करने का कोई तरीका नहीं है विदाउट कटिंग द स्ट्रैंड, ओके। एनीवे, सपोज this is we could say the eukaryotic DNA. Let's for example, this is the eukaryotic DNA. We can say, okay, then if you attach the end, this become the prokaryotic DNA, okay. So here is no end. That is remarkable, and we need to understand that in the prokaryotic DNA there is no end. It is circular actually, and in the eukaryotic DNA there is an end. There is the end. Okay. So we need to also understand about this ending point because this is very remarkable in the case of cancer treatment. Now, if you take an example of prokaryotic cell, like for example E. coli, okay, it has DNA of approximately 4.6 into 10 to the power 6 base pair. E. coli DNA, it is approximately 4.6 million. Okay, and in mycobacteria, it contains approximately 10 to the power 6 base pair. So, what is remarkable here? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? जो eukaryotic DNA and prokaryotic DNA, there is a sort of difference, and that difference was the linear and circular, and there is also a few differences that the eukaryotic DNA was a little bit longer than the prokaryotic DNA. In eukaryotic DNA, typical eukaryotic DNA was approximately 10 to the power 9 base pair long. That is approximately in billions, and prokaryotic DNA approximately in millions, 10 to the power 6 base pair long. So why is it important? We are studying about replication, and in the case of replication, why do we need to know about how much long the DNA is? क्योंकि ये जानने के बाद ही हम लोग इसके इम्पोर्टेंस को क्वांटिफाई कर सकते हैं, जो आखिर किस स्पीड से डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ओके। बट बिफोर गोइंग देयर वी नीड टू ऑल्सो नो अबाउट लिटिल बिट अबाउट द वायरसेस, जिसमें कि डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए है, ओके। कुछ ऐसे हैं जिनमें कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, और कुछ ऐसे हैं वायरस जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, एंड कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें कि आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल स्टोर है। सो इनका जो रेप्लिकेशन होता है, ये तो ये अपने सेल में रेप्लिकेशन करते नहीं है, ये जब भी रेप्लिकेशन करेंगे एज ए पैरासाइट किसी और के सेल में करेंगे, जनरल यूकैरियोटिक सेल में करेंगे। कुछ हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफेज, दैट इनफेक्ट बैक्टीरिया। तो वन थिंग दैट इज रिमार्केबल हियर, this virus that contain only RNA genome, as for example the HIV virus or any retrovirus, and how does it replicates in DNA? Is the DNA present in its generation? क्या इसके जनरेशन में किसी भी स्टेज पर DNA मौजूद होता है? हाँ, होता है। अगर हम HIV की बात करें तो हमारे माइक्रोफेज में जाने के बाद ये जो रेट्रोवायरस HIV वायरस जो है, वो तरह रेट्रोवायरस है, वो अंदर जाने के बाद हमारे सेल को हाईजेक कर लेती है, और हाईजेक करने के बाद हमारे सेल को रेगुलेट करती है और बताती है तुम मेरा DNA बनाओ, ओके। सो हाउ द RNA genome form DNA? That was not discussed in the Central Dogma by Crick. Crick ने RNA से DNA बनने के प्रोसेस के बारे में नहीं बताया था। That was not included in Central Dogma. So इसकी वजह से इसकी अलग से डिस्कवरी हुई, और हमारे एक भाई साहब डेविड बाल्टीमोर को नोबेल दे दिया गया। क्यों दिया गया नोबेल? इन्होंने डिस्कवर किया एक ऐसा एंजाइम, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से RNA DNA में कन्वर्ट हो रही थी, एंड दैट वाज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। So reverse, what is transcription? Transcription is formation of, okay, hold on. So this process was DNA to DNA replication, okay, and DNA to RNA, that was transcription, and RNA to protein, that was translation. And David Baltimore, what he discovered? He discovered the process of transcription का उल्टा, that is reverse transcription, and from RNA to DNA, and that was reverse transcription, and the enzyme was reverse transcriptase. इस यहाँ पे एक बात काफ़ी इजी और काफ़ी रिमार्केबल है, जो भी प्रोसेस है
जो भी एंजाइम है अप्रॉक्स 90-95% एंजाइम प्रोसेस के अकॉर्डिंग का नाम रख दिया कि एंजाइम का। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम याद रखने में कोई खास प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड द एंजाइम वाज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड डेविड बाल्टिमोर was given Nobel Prize for this discovery. Okay.